145 जोरा रखी जोरा इंट्रोड्यूस करिजे फर्स्ट थिला स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 ट्राई टू रिमेंबर इट और एमसीक्यू स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 सेकेंड हिंदू मैरिज एक्ट 1955 थर्ड रहिला हमर हिंदू adoption and maintenance act 1956 हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 listen then amar roji hindu succession act of 1956 then a dowry prohibition act of 1961 maternity benefit act of 1961 एगुडा का रिपीटेडली कंप्लीट करो एमसीक्यू रे टॉप स्कोरिंग होबो तनु जते शीघ्र जो मानकर जते प्रकार बही अछि से बही सैंपल पेपर सब नै टिके मु भाबुची मझिर मझिर कॉलेज बंद करो तमे जो दिन कॉलेज बंद करियो मु 5-6 घंटा समय दे परिबी नोट्स जो भली प्रति वर्ष पिला माने अक्टोबर नवंबर रे नोट फाइनल करंती तमे से भली प्रिपेयर्ड हो स्कोरिंग होबो नेक्स्ट रहउची वुमेन मूवमेंट आफ्टर independence paper am women movement rahuje in spite of the marginalized section of the society to eradicate age-old socio-cultural and religious evil practices many women organizations have raised their voice as a result several women movements have been spontaneously most in India against the following problems ile independence पूर्वरु हमर किछि अचीवमेंट्स इंडिपेंडेंस परे परे जेति कि अचीवमेंट होउची आदि दिन रे जदि किछि गोटे सेक्शन आसीबो किछि एनाक्टमेंट आसीबो सेटा हम कामरे लागिबो इंडिपेंडेंस पूर्व कथा हमें भाबिबा कथा नुए फिर भी फास्ट होउची अगेंस्ट डाउरी जो तो हमर कोन सब प्रोविजन निहाइची इन स्पाइट ऑफ प्रोमulgation of a dowry prohibition act dowry related torture deaths continue to rise progressive organization of women and Hyderabad was the first organized powerful movement against dowry in 1975 हैदराबाद होची प्रथम स्टेट जे कि यौतुक निरोध बाबद रे प्रथम तार रूल रेगुलेशन फॉर्मुलेट करितिला 1975 it uses to attract more than 2,000 women in their demonstration and the anger had spread Punjab and Bengal but the movement took deep and permanent roots in and around Delhi because the problem was acute there. Now, the scope and area of the movement has broadened as a number of dowry-related cases have increased. हाँ पिले, तुम्हें जानी थी वो हमारा सबूतर बड़ा social problem रहुची dowry system. Dowry system टा बाबत रे प्रथमे हैदराबाद किछि enactment आनिला ता परे परे हमर स्प्रेड करा गला महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य प्रदेश गुजरात पंजाब एंड बेंगल केतक जगह रे सक्सेस हेइची केतक जगह रे सक्सेस हेइनी आपको नोट्स कला बेले टोटली प्रेजेंट डाटा दबा को पड़िबो सोशल प्रॉब्लम रे इश्यू जर्नल को बेस करी नोट करिया को पड़िबो केबे भी ओवर कॉन्फिडेंस होबनी जो पिला भी भलो पढो कि न पढो मु से कथा कहउनी समस्त हमको समस्त हम पई समान समस्त भलो रिजल्ट करिबा आ परीक्षा इंपोर्टेंट परीक्षा पूर्व दिन पिला भी नोट सेंड करी ऑल ओडिशा टॉपर होई जा एबे हम पई बहुत बढ़िया समय अछि खाली तमे टिके टाइम फॉर्मुलेट करो आ एक्स्ट्रा क्लास नाही पर्सनल डाउट क्लियर रे 5 जण 6 जण 7 जण 10 जण सर हमें आपण अछंती कि पळे आसा मु निश्चित रूप एनी टाइम देबी काना बेसी कॉलेज कंटिन्यू करनी नोट हार्डली हमें 15 दिन भीतर फाइनल कला परे परे पिला का स्टैंडर्ड अनुଯାयी क्रिटिकल वर्ड देखि नोट फॉर्मेट चेंज करिबा हैला जते जे अधिक प्रिपरेशन होबा सेते कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग रही आउ टिके स्पेसिफिक भलो भलो सीरीज रो नोट्स मटेरियल करिबा नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमें देखिबा अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूज rapes and other forms of sexual abuses are the most common crime against women apart from rapes in family and due to personal loss or enmity rapes are quite common occurrence in communal and caste tensions and in police custody the rape of Ratmeja Bai in police custody and Nirbhaya rape case in Delhi became infamous cases reported in India agitation against rape for the first time started against Polypress case and which large number of women organizations are protesting against sexual abuse and harassment. Mahila Sangha, sorry, Sasbala, na? Sasbala Mahila Sangha
then Janodi, Mahila Samiti are some of the striking names in this field. विभिन्न प्रकार वुमेन का अगेंस्ट रे जो दिया जाउची बेसिकली तमे तो एई बाबत रे एई पॉइंट एडी देछि किंतु लॉ रे आर दुनिया आर्गुमेंटेशन अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूज आ बाबत रे टोटली एनएक्टमेंट बहुत गुडे केस स्टडी अछि जेतु तमे प्लस सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस केला एतिक मु तुमको कहबी जे एवं वुमेन माने आदर इन्वॉल्वमेंट अछंती बोली कुआ जाउची किंतु मन रख तमे भी निजे छोट ना भाबिनियो यदि एई भली केस आसे सेति पे रिस्पांसिबल किए बोथ मेन एंड वुमेन सो फार एज लॉ इज कंसर्न जेहेतु गोटे पॉलिटिकल साइंस रे अछि वर्तमान आमे कोन करबा एटा अगेंस्ट वुमेन मान के विरुद्ध रे रहउची बेले खाली घुसिगिरी मन रखिबो किंतु एथि पई बोथ आर रेस्पोंसिबल अगेंस्ट अल्कोहल alcoholism is a major cause behind wife beaten and family violence unending and increasing improvement of a family is also mainly because of a man's income being wasted on this finance that is why all women bodies take up alcohol as a major issue. The women we are the first women to have raised their voice against the alcohol menace by breaking liquor codes in 1972. Many such type of movements have been organized in India, but the most sustained and successful having been the and particularly we are talking about intoxication or alcohol. अल्कोहल नहीं कि अधिकांश समय माने कोन करंती ना पर्टिकुलरली मेन पर्सन माने बहुत किछि डिस्टर्बेंस करंती जोटा पाई कि हमर गोटे कोन करूचे ना विभिन्न प्रकार रैली रहउची एनएक्टमेंट आछी टू चेक अल्कोहलिज्म कमिते निशा द्रव्य गुडा को पुरुष लोक माने आउ महिला मानक पर अत्याचार करिवे किंतु बहुत जगह रे पिल देखा जाउची जदी सोशियोलॉजी रो लेडीज माने भी अधिक देखिबो भलो भलो डॉक्टर माने अछंती भलो भलो पोस्ट रे लेक्चर इवन सालेपुर थाना रे मथे पांचटा डॉक्टर को अटक रखा जाय तने कहि हबनी जेतु हमें पाठ पढुचे एई टॉपिक भितरे खाली तार ओडिया मीनिंग बुझिनियो अगेंस्ट अल्कोहल मद निशा विरुद्ध रे किछि किछि कार्यक्रम करा जाउची एवं एइटारे स्पेसिफिक रोल रहउछंती को मानकर ओमेन मानकर पिले आ गोटे कथा देखिबा आमे जदि कहिबा गोटे मद दुकान गोटे पुरुष लोक करिछि बोली असुविधा होछि पुरुष लोक जेतबेले मद दुकान कला जो पैसा रोजगार कोन स्त्री पोछि होनी जो वुमेन अगेंस्ट एट्रोसिटी जाउची एकमात्र गोटे सॉल्यूशन कोन जेतेबेले बोथ मेल आउ वुमेन सोर्स ऑफ इनकम पैसिबे के क्या ऊपर डिपेंडेंसी रही that is the resolution or solution. Human rights for women. All rights of women and of these include right to equality and rights against discrimination, right to freedom, right to self-dignity, respect, etc. But these human rights of women are violated through different ways like honor killings, domestic violence, dowry torture, denial of equal treatment in life and society. Various social movements have been organized throughout the country for the protection of one rights of women. Human rights for women हमर आर्टिकल 30 एटा तमे +3 पीजी लेवल ले पढी ह्यूमन राइट्स कमिशन द 30 होची आर्टिकल ये 30 जो आर्टिकल भीतर यदि हमें सफर करबा भी जज करबा ताको अकॉर्डेंस अनुଯାयी डिस्कशन करबा देखिबा गोटे वुमेन प्रकृति रे वायोलेटेड होची आ गोटे वुमेन द्वारा मन रख जदि हमें देखिबा डाउरी प्रोहिबिशन डाउरी एक्ट रे जते फैमिली कोर्ट को जाउची का अगेंस्ट रे जाउची सिस्टर इन लॉ मदर इन लॉ से माने कोन वुमेन नहोती कि हुआ ये समाज रे इबिनी केही नहोती इबिनी ओडिसा रा महिला कमिशन रो जे हेड होतंती मिनती बेरा ताको भी जेतले बहुत समय क्वेश्चन करा जाउची एई बाबद रे जे महिला मानन को केमिति प्रोटेक्शन दिया जीव महिला जे प्रोटेक्शन को आसी बेरबे जे कोन के महिला न चाहिबे ताको के प्रोटेक्शन देई पारि माने तमे उदाहरण स्वरूप मु कहबी एडी लोकल रज तमे कहिलो तम सेल्फ डिफेंस तुम ऊपर डिपेंड करूची ना प्रत्येक लेडीज को पाखरे गोटे लेडीज कांस्टेबल प्रत्येक पुओ पिला के पाखरे गोटे इंस्पेक्टर समस्त को 147 कोटी लोकन को पाखरे गोटे गोटे कोन इंस्पेक्टर मान को पोस्टिंग दिया जाय परिबो कि हां एटा होची सेल्फ अवेयरनेस प्रोग्राम आमे निज को निज सचेतन हबा आमे जो कार्यक्रम करिबा एटा हम पई हार्मफुल कि बेनिफिशियल सेटा आमे जज करिबा ये समाज रे भाबिया दरकार प्रत्येक परिवार पाखरे किछि ना किछि पुरुष अछंती
प्रत्येक परिवार रे किछि किछि महिला अछंती पुरुष एवं महिला परस्पर सप्लीमेंटरी एंड कॉम्प्लीमेंटरी पुरुष को छाड़ी महिला रही परिबेनी महिला को छाड़ी पुरुष रही परिबेनी तेणु सरकार जेते प्रकार कार्यक्रम करछन्ती बेटर रहइबो पुरुष एवं महिला मानक भीतर जदि कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड रहिला ताले ह्यूमन राइट्स कमिशन रे एठी किछि इंटरफेयर करिवार आवश्यकता प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड एनवायरनमेंट mindless exploitation of natural resources for development and generating prosperity for last 60 years has not only resulted in environmental degradation but also threatened the life and livelihood of women. Women are the most affected as a result of environmental degradation and indiscriminate robbing of nature. Women have to face more hardship for collecting food, water, and firewood. That is why women's movement have been most powerful with regard to their and their family lives, livelihood, and conservation of environment. Chipko movement and Narmada Bachao movements are good examples in this regard. Protection of livelihood and environment. Really, particularly यदि हमें देखिबा जो ट्राइबल पॉपुलेशन अछंती ट्राइबल पॉपुलेशन रे विशेष कर जोटी आदिवासी अध्युषित अंचल पुरुष लोक माने एग्रीकल्चर को गले स्त्री लोक माने कोन करंती पहाड़ को गले विभिन्न प्रकार काठ काटिले जाळडी आनिले पत्र आनिले बिक्री करले इवन दांत काटे आनी के सेमाने मध्ये बिक्री करले सेमानकर लाइवलीहुड को मेंटेन करले किंतु जेतेबेले वर्तमान पहाड़ एरिया रे कोन होउचे आ लोक मान को रिसर्च को एते परमिशन मिलुनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिशन दउनी एटी देखा जाउची लेडीज लोक मानकर सोर्स ऑफ इनकम का दिन को दिन कमेबा को लागुची दैट्स व्हाई सर्टेन टाइप ऑफ movement is also going on and the best one is Chipko movement and Narmada Bachao Andolon. Then student has like move abuchi बहुत भलो क्वेश्चन environmental protection परिवेश को आमे केमिति कोन सुरक्षा देई परिबा it is the vital issue students. Environment consists of physical, chemical and biological conditions which influence life on earth. It is essentially made up of both nature and man-made conditions. Since dawn of civilization there has been a constant interaction between man and environment. Environment creates essential conditions for humanly living. In the ancient society, there was a perfect balance between man and the nature. But with the passage of time, this balance has been broken down. Man has been mindlessly by exploiting the natural resources for economic development and getting prosperity in the last 2 centuries with the growth of industrial revolution. This has created an imbalance. In other words, the process of development brought out by the industrial revolution has depleted the resources faster than natural replenishing capacity of the environment. Hence, there has been a deterioration, degradation, and a crisis in the environment. आपले जदि हमें कहिबा हमर बायोलॉजिकल मदर जने अछंती आउ जने नेचुरल मदर अछंती नेचुरल मदर इज नथिंग बट आवर एनवायरनमेंट आम मां हमको गटबा हमको जन्म दे देले किंतु वर्तमान आम कौन कर नेचुरल मदर पाखे ट्रिटमेंट हो ग्लोबल वार्मिंग काली बोधे लो प्रेशर बांग्लादेश कारण कौन आम ऑब्जर्व करूना दीटा सीजन ऑब्जर्व करते 6 किछि अंश रे समर किछि अंश रे रेन आ ग्लोबल वार्मिंग सब बेले शीत सीजन रे वर्षा होउची गरम भी होउची क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हे गेलानी तार फैक्टर कौन इट इज नथिंग बट ग्रीडीनेस ऑफ ह्यूमैनिटी गछ अछि गछ आमे काटिले गछ आमे लगेइबा यदि गछ आमे काटी काटी चलिले इम्बैलेंस आसीबोनी कि भाबिनियो ये समाज रे जेतेबेले आमे कोन करूचे अफॉरेस्टेशन ऊपर फोकस करूचे सेतेबेले डिफॉरेस्टेशन वाइड स्प्रेडिंग होउची जेतेबेले डिफॉरेस्टेशन ऊपर फोकस करूचे अफॉरेस्टेशन वाइड स्प्रेडिंग हवा दरकार जेति के आमे गछ काटिले तार मिनिमम आमे 12 गुण गछ लगेइबा दरकार कारण 12 गुण जदि लगेले 50% गछ बंचिबार पॉसिबिलिटी अछि दरकार पड़ले बहुत एरिया रे हिली एरिया रे जीरो रिजल्ट तेणु जो रेट रे गछ काटुचे जो रेट रे इंडस्ट्रियलाइजेशन करूचे से अनुଯାयी आमर प्लांटेशन नाही सेति पई कोन होउची ना देयर इज डिटेरियोरेशन डिग्रेडेशन एंड क्राइसिस इन द एनवायरनमेंट रे सब बेले कोन होउची ना क्राइसिस राइज करी रहउची कोन क्राइसिस राइज करची इम्बैलेंस फैमिली रे इम्बैलेंस जति के एक्सपेंडिचर होउची सेति के इनकम नाही रिलेशनशिप रे इम्बैलेंस जति के भीतर रिस्ट्रेंट रहबा दरकार हमें ओवर क्रॉस करूचे even source of जेतेबेले अर्निंग कथा कहबा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नाही दैट इज इम्बैलेंस जो रेट रे हमें पाठ पढिबा कथा एग्जाम रहिला अक्टोबर मास हे गला हम पई आसी गला प्रकोष्ठ समय जे जे पढि जदी वर्ष को जाक अकटा पढिले इट इज आल्सो इम्बैलेंस तेणु एनवायरमेंटल कंडीशन को जेतेबेले हमें सबजज करबा एनवायरमेंटल कंडीशन को हमें गोटे प्री रिक्वायरमेंट बोली कंसीडर करबा
फर्स्ट ऑफ ऑल आमे देखिबा एनवायरनमेंट रो एनग्रोसिंग फोकस आम ऊपर कोन अछि एनवायरनमेंट को बेस करी आमे भलो रिजल्ट करि परुचे कि न करि परुचे पिले गोटे एग्जांपल तुमको देबी तमे जानिचो फर्स्ट होची बॉडी डायरेक्टर स्टडी आमर जदि सुस्थ सबल मन अछि आम पाठ पढ़ाटा बढ़िया होई पारे यदि मन सुस्थ सबल आमे रखिया को पड़िबो ताले हमको क्लाइमेटिक बा एनवायरनमेंटल कंडीशन को कोन रखिया को पड़िबो ना सुपर रखिया को पड़िबो यदि एनवायरनमेंटल बा क्लाइमेटिक कंडीशन हमर सुपर नाही ताले हम स्टडी रिजल्ट केबे हमर भलो सो स्टूडेंट्स ए जो टॉपिक कहछि टिके ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ नेचर हमको क्रिएटेड करिसेंती ट्रीज नेचर क्रिएटेड करिसेंती रिवर नेचर क्रिएटेड करिसेंती सीज नेचर क्रिएट करिसेंती ओशन नेचर क्रिएट करिसेंती ह्यूमन बीइंग्स नेचर कोटा क्रिएट न करिसेंती एवं नेचर जोटा क्रिएट करिसेंती वन टाइप ऑफ बैलेंस इज देयर देखो पिले प्रत्येक सीजन क्रिएट करिसेंती नेचर किंतु आमे ताको ऑब्स्कर्ट करिछु आमे ताको इम्बैलेंस करिछु जेतेबेले तमे भाबी नियो आमे कोन कले बहुत गुडे फॉरेस्ट एरिया को कोन कले डिस्मेंटल कले फॉरेस्ट एरिया को कोन कले काटिकरी सफा करि देले इंडस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट कले जेतेबेले इंडस्ट्री हम एस्टैब्लिशमेंट कले भाबी नियो मैक्सिमम प्रोक्योर हैला कोन केमिकल बर्तन सब जिनिस हे गेला कोन कि प्रकृति रे केमिकलाइज सब जिनिस केमिकल हे जाउची तेनु जो जिनिस हमें खाइले सेटा हम पई कोन हैला दोज आर एक्टिंग एज पॉइजनस से गुडे पॉइजनस हे गेलानी so we are not surviving much more so students besides industrialization due to unprincipled use of natural resources rapid urbanization mass transportation use of pesticides population growth has led to environmental pollution of air water and soil सब जगह रे वर्तमान प्रदूषण air pollution water pollution soil pollution emission of poison gases from the vehicles and automobiles and industry all over the world has caused global warming and climate change and done untold damage to the environment बिले तमे एती गोटे भाबी नियो तमे वर्तमान रूम रे काम एंड क्वेट रे बसी के पाठ पढुछ एई जगह रे मु कोन करबी गोटे देई देबी गुड नाइट कॉइल एटा पोल्यूटेड हैला ना नाही एटा पोल्यूटेड होबार कारण कोन किछि पोल्यूटेड पार्टिकल के बाहर करिया पे हम एटा के यूटिलाइज करले मशा मान को दूरे दबा पे ये एरिया टा जेतेबेले फोम रे भरपूर हेई गला तमे देखियो पाठ पढिया पे तुमको शूट करिवो बहुत मोल पिला मानकर मध्य अछि एलर्जी बहुत पिला मानकर अछि ए जो मेम्ब्रेन रहउची लिक्विड र एलर्जी मध्य रहिची जोटा को से माने टिके निश्वास रे नेला माने ताको बॉडी बा माइंड अपडेटेड रहइबन शूट करिबन से कोन हेबे इरिटेटिंग हेबे दैट्स व्हाई वी आर लूजिंग आवर टेम्परामेंट रिलेटिंग टू स्टडी और एजुकेशन प्रत्येक फील्ड रे देखि कि जाओ हमर इवन वेजिटेबल्स देखिनी हम लाइफ लाइन कंडीशन को देखि दियो हमें जति कि मैक्सिमम यूज करछ डिटर्जेंट को देखि दियो को गुडा को पिला हम पई आउ फैशनेबल नुए हम पई आउ हाइजेनिक नुए almost all the things are getting to be adopted. The increase in population during the last few decades has increased pressure on the environment and has created acute problems. Vast pollution, radiation, and environment across the globe has led to a tide of a protest movement by the victims of development. Collectively, fiction movement, it has got a common awareness program. आमे समस्ते बाडे होजे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कथा मु भी कहूची पिले आमे एटी वर्तमान अछि नियर अबाउट 45-50 जन मु भी बहुत एसोसिएशन सहित जड़ित जो माने प्लांटिंग करछन विशेष करी आठगड़ साइड रे बहुत एरिया प्लांटेशन करा जाउची अफोरेस्टेशन पय ए वर्ष कोन सी जगह रे गोटे सक्सेसफुल हेनी प्लांटिंग प्रोग्राम खाली मिनिस्टर माने जाई छथि किबा ए जो स्कूल गुडा रे कोडी 5टा 10टा गछ आमे भी 2-3 थर स्ट्रेटजी नेलु प्लांटिंग पय 3टा जगह रे गलु फेलियर गत वर्ष बर 400-500 गछ लगैथिलु ए वर्ष जीरो लागिछि तेणु मोर कहवा कथा आमे जदि बाडे हेबा एनवायरमेंटल पोल्यूशन होछि प्लांटेशन कर कहवा अपेक्षा प्रत्येक पिला जदि आमे 40 जन 10-10टा गछ लगेले ताले 400 गछ लागिबो आम मानक भीतर एतिक हेई पारुछि कि हेई पारुनि गोटे गार्डियन जदि कंप्लेन करिवो मो पिला पाठ पढुनी ता अपेक्षा गोटे गार्डियन जदि संध्या बेलु राति 10टा जंगे पिला को जगिगिरी बसिला पर मो पिलार बेटर बेनिफिट आसी को पिले सेति पई गोटे इंग्लिश रे कोटेशन अछि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स आमे खाली भुकिएले किछि हबनी पिले एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पई आमे बाडे हेले किछि हबनी एटा सरकार कर काम नय प्रत्येक व्यक्ति विशेष कर काम प्रत्येक जार जागा बडी अछि काम जार बाडी बगीचा अछि काम निज बाडी रे जदि आमे 5-5टा गछ हम छात ऊपर 5-5टा फूल गछ लगैले ताले कुछु बा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करे unless it would be a dumb skill within the hollow drop. खाली बाड़ी हवा किछि लाभ मिलेबनी. So these are the topics given in your book, students.
Environmental protection movements in India. After securing independence from the clutches of foreign rule, India has been vigorously engaged in pursuing all-round development of the country. For this purpose, Indian state has been engaged in the construction of mega projects, dams, projects, power projects, construction of roads, new cities, industrial areas, special economic zones, weapon testing ranges, ordnance factories, cement plants, big steel plants, etc. Such type of development projects while accelerating pace of economic development caused in a big way the destruction of nature and environment. आमे जहाँ भी करूचे गोटे सीमेंट फैक्ट्री करबा सीमेंट फैक्ट्री जते बेले आमे कले से एरिया रे किछि गछ को काटी तम मानक भितरे जो मानकर घर थिबो पर्टिकुलरली झारसुगुड़ा कि राजगंगपुर से जानुथिबो से गछ गुडा का आउ ग्रीन क्लोरोफिल नाही पाउसिया कलर तेणु जते बेले गछ काटिले इकोलॉजिकल इम्बालांस कले जते बेले डस्ट पार्टिकल उड़िला एनवायरमेंटल पोल्यूशन कले जते बेले साइंस रे हम डेवलपमेंट करूचे मैक्सिमम आम पई कोन रहउची हर्डल्स रहउची सेति पई कॉमन अवेयरनेस प्रोग्राम दरकार जो लोक ही प्रकृति रे गाड़ी के चलाउची से पोल्यूशन फ्री गाड़ी प्रथमे निजे चलेबा दरकार आमे अनौजे पुलिस केतबेले हमक धरिबा की फाइन करिबा की तापर आमे जाई कोन करिया पोल्यूशन फ्री सर्टिफिकेट तो आम मान भर पिले जब कॉमन अवेयरनेस न आसी प्रॉपर एजुकेशन न आसी एजुकेशन वैल्यू सिस्टम न आसी आमे केबे प्रस्ताव करिबा नाही तो स्टूडेंट्स केतेटा टर्म एटी यूज करा जाय ता भितर मु गोटिए कथा कहि देबे पिले तम पई बहुत इंपोर्टेंट होची स्पेशल इकोनॉमिक जोन एसईजेड ता माने कोन जो एरिया रे आमे कोन करू इकोनॉमिक सस्टेनेंस पई कोनसी प्रोग्रामिंग एक्शन करू एवं से प्रोग्रामिंग एक्शन द्वारा हमकु हमर पर कैपिटा इनकम बढ़िला हमर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़िला नो डाउट किंतु गोटे जिनिस होची से भलिया जोन गुडा को केमिति सुरक्षा करा जिवो दैट इज एक्चुअली पावर प्रॉब्लम फॉर द कंसर्न गवर्नमेंट पई सेटा गोटे पावर प्रॉब्लम इन द सेंस जेतबे पॉलिटिकल फैक्टर चेंज हो जाउची सेतबे रिलैक्सिंग होची कोन का रिलेटिवली मेजर सो आमे जेतबे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंसीडर करता कहउची किबा वेपन टेस्टिंग रेंज तमे जानिथिबो बालियापाଳ क्षेपणास्त्र घाटी जोट सेठी मध्य टेस्टिंग जोन रहउची से एरिया रे मध्य हडल होची रिलेटिव टू एनवायरमेंटल कंडीशन को सो स्टूडेंट्स the process of development carried out in the last 67 years has resulted in unfettered exploitation of nature has brought in its wake vast of waste environmental pollution and radiation hazards. In other words, various development projects not only cost huge resource depletion but also damage the environment. Mega development projects initiated and implemented by the state also threaten the life and livelihood of the people. This has led in recent years a tide of a protest movement in India by the victims of development. Chipko movement, Narmada movement, Silent Valley movement, Posco movement are some of the major environmental movement of recent times. बहुत किसी environmental movement आछे protection of environment पाई एवं आधरे protection of environment केते हेई परछत ताधर मध्य protection of livelihood हेई परछ जादर आमे कोन करछु हमर जीविकार्जन करि परछु आ बहुत समय देखा जाउची जोटा हमर एक्सपेक्टेशन होची एक्सपेक्टेशन अनुଯାयी बहुत गुडा ऑब्जेक्ट फुलफिलमेंट हेई पारुनी तमे पोस्को बाबद रे जानि थिबो साइलेंट वैली बाबद रे जानि थिबो नर्मदा बचाओ चिपको मूवमेंट जानि थिबो बहुत किछि रिवोल्यूशनरी एक्शन आछि गवर्नमेंट फॉर रे गवर्नमेंट अगेंस्ट रे बहुत किछि अछंती वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन इफिन मते तमे जानि थिबो फैक्टर जो क्वेश्चन की आसी पारे हम अपरो चैप्टर रे अछि समस्त किछि किछि कंट्रीब्यूट करछन सस्टेनेबल लिविंग व्हाई प्रोटेस्ट मूवमेंट प्रकृति हमें कोन पई प्रोटेस्ट करूचे the blind faith in ideology of development through industrialization urbanization setting of mega projects has caused a huge resource of depletion environmental pollution particularly air water noise etc land degradation desertification besides that various mega development plans have violated the rights of the local people. It is not only deprived the people of the natural pollution-free environment, but also taken away the rights of livelihood and livelihoods. For example, deforestation stretches the work hours of women collecting fuel, wood, and water logging. The tribal lost benefits of forest produce. The fishermen in Goa, Kerala, and Odisha suffer from existing trawling. Thus, various mega development projects not only damage to the environment but threaten the life and livelihood of the local people. The people affected by the project problems of environmental degradation and violation of basic human rights
By the implementation of mega projects, people in various parts of the country are raising their voice against environmental degradation and devastation. These protest movements for guiding environment are collectively called Indian environmental movements. Environmental movements have been developed mainly the issue of equality in focus. These movements have emerged largely taken the roots of a conflict between the omnivores who have gained desperately from the development policies and largely ecosystem people whose livelihood have been variously or seriously compromised. Listen to me, students, what they're telling about why protest movements are there. A protest movement रे छटा खंडे पॉइंट बाहरिबो जेतिकी बर्तन आमे पढिले डिस्कशन होउची एगुडा सब नोट्स रे रहइबो प्रोटेक्शन मूवमेंट रो फास्ट गोटे कोन करबा एठी दबा सोशल कॉज पॉलिटिकल कॉज इकोनॉमिकल कॉज टेक्नोलॉजिकल कॉज आ सबुठारो बड़ होउची आजिकली मनुष्यर मर्सनरी बा फाइनेंशियल कॉज जोटा हमें कहूछु मनुष्य पे रेस्पोंसिबल होउची पॉवर्टी पिले मु कहबी रोड करे गछ लगेला गोटे लोक काटी किरी नउची तार कारण कोन काठटा बिक्री करदेले ता लाइवलीहुड मेंटेन करिवे आम इकोनॉमिक कंडीशन जोटा इकोनॉमिक फैक्टर मत रेस्पोंसिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ आवर एनवायरनमेंट पर्टिकुलरली तुमे देखि जदि मु कहबी आम पाखे सोर्स ऑफ इनकम अछि आम काई की का बाड़ी की रास्ता कड़रू कोन पे काठा चोरी करी नै की जीवा गछ काटिबा इवन एभली प्रकार सिचुएशन को हमें गति करूचे खाली मेंटेनेंस ऑफ आवर लाइवलीहुड वी आर आल्सो परसुइंग आवर एनवायरनमेंट टुवर्ड्स डिग्रेडेशन और रिप्लेशन आमे अधपतन घटौचे आम एनवायरनमेंट रो आ गोटे पिला बड़ रीजन रहउचे जेतेबेले एनवायरनमेंट मूवमेंट गुडा चलीला से एनवायरनमेंट मूवमेंट गुडा केबे किरे सक्सेस होउनी कोन पई सक्सेस होउनी एनवायरनमेंट मूवमेंट किछि दिन पर्यंत चलीला जे लीडरशिप नउचदी दे आर गेटिंग टू बी पॉलिटिसाइज तमे देखिनियो वर्तमान मु कहबी लीडरशिप नै कि तम मानक भितरे एनवायरनमेंटल मूवमेंट को गला कि देखा गला तमे जानिथिबो एठी भी किछि दिन पूर्व पाखा गोटे घटना होची महानदी के इन्वॉल्व हो गले बीजेपी जीती गला तांको पार्टी छु तेणु पॉलिटिकल फैक्टर जदि आसी गला पॉलिटिसाइज हो गले ता द्वारा हमर कोन के जो डिमांड ता कोन फुलफिल होउची कि पुनी गला पुनी जदर पॉलिटिकल चेंज होई कोन आउट केमे सरो उठेला एमती बेले बेले करा तमे मध्य पिले देखियो मु उदाहरण स्वरूप कहबी तमे कहबो जे प्रकृति रे आदिवासी ओरिजिन मानकर समाज रे मंगल हो सेति पई तमे गोटे ग्रुप करिकरी कोन कला रैली करिकरी चलिला कोठी मुख्यमंत्री के बैठक मुख्यमंत्री कहले अरे बाबा तमे कोन करछ एते थर आसिलो ना आगे हम कोन करबे रैली रे अछि गोटे बेकारी लोक ठीक अछि बेकारी लोक तमे रैली रे काई एते थर आउ जाओ तम गोटे मु 5 लाख टका लोन दोछि तमे व्यवसाय करी बसुना तमे से लोन डी पाई गेला चुपचाप करी बसिला तले हमर एकमात्र सेल्फ सफिशिएंसी रहउनी प्रोग्रामिंग एक्शन रो कारण होउची कोन लीडरशिप बा क्वालिटेटिव जो माने मेजरेबल इक्विपमेंट रे अछंती से माने प्रॉपर वे गाइडलाइन रे रहउनांती किछि दिन पई रहिले गाइडलाइन रे किछि दिन पई कोन कले लीडरशिप नेले किछि दिन पई सर उठैले तापर तांकर जते बेले पर्सनल बेनिफिट आसी गेला से चुपचाप करे नेक्स्ट स्टूडेंट्स गोटे रहउची हमर पर्टिकुलरली केस स्टडीज जोटा कि निहाती जरूरी ये क्वेश्चन गुडा तमे देखिबा विथ ए व्यू टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरमेंटल मूवमेंट्स ए case studies are presented below. The case studies will provide a big account of genesis protection movements in India. प्रकृति रे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मूवमेंट रो ये गोटे गोटे केस स्टडी एठी पढिबो एठी मो सहित डिस्कशन करिवो इंग्लिश टू इंग्लिश डेलिवरेशन करिवो जो माने ओडिया रे पढिबो एठी भी ओडिया रे डिस्कशन सरी जिवो किछि असुविधा नै आराम से मो कॉन्फिडेंस रहउछि पिले निश्चित रूपे इफ यू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ द रिजल्ट इज गुड देखो साइलेंट वैली मूवमेंट देखिला साइलेंट वैली मूवमेंट वाज ओरिजिनेटेड इन कोठी केरला. It is one of the earliest landmarks in the recent history of an environmental movement in the direction of preserving environment by people's own struggle. एटी लोक माने निजको निज संग्राम करिथिले. The region for its origin lies in Kerala government's proposal to build a dam on the Kuntipuja river in early 1970s. The prime purpose of building the dam was to generate power for industry. The construction of a dam was to cover 70 square kilometers as catchment area. As a result, India's richest tropical forest known as Silent Valley is to be submerged and flooded. In this project, there was no displacement or rehabilitation problem. Therefore, Silent Valley movement was the first purely and primarily first environment movement. The odds against the movement was heavy. The state government was in total control of the issue. All the political parties and industries were in full support for building the dam over river Kuchipu. Listen to me, students. जेतेबेले साइलेंट वैली कथा कथा हमें कहू सेतेबेले हम मन भितर बहुत किछि आसे जे पिले दीटा प्रॉब्लम हम पई सब बेला पई रहिछि
जितेबाला आम डेभलपमेंट कथा कहूँ से डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कथा जो आम कहूँ आम हूँ रिहाबिलिटेशन ये तीन टा पॉइंट को बेस कर सब लंग क्वेश्चन लिखी जितेबाला मुझे कहबी गोटे एरिया रे आम इंडस्ट्री एस्टाब्लिशमेंट करूँ इंडस्ट्री एस्टाब्लिशमेंट कलु माने कौन एटा डेभलपमेंट से एरिया लोक मानू आम कौन कर आउ गोटे जगह छाड़िया चेष्टा कर मु उदाहरण स्वरूप कहबी रेभेन्सा कॉलेज पाखे धर जो 20टा गुपचुप दुकानी वाला कौन करते राणीहाटा जो तुम तो देखी न राणीहाटी स्वीट स्टॉल स्टाइल से सब गुपचुप वाला आगे रोचे से घर भंगा होगा कहगला तुम जाओ पड़े जाओ गोपालपुर रही अरे रेभेन्सा कॉलेज पाखे से गुपचुप आलुदम दहीबरा कर बिकुले गोपालपुर पाखु किए किणी नब से कौन करेंगे से ये देखिए बोले गोटे एससीबी बेहेरा ले मैक्सिमम रोते बेहेरा लोक मैंने विशेषकर जो मैंने रोचे स्वीपर कम करते मेडिकल रे कि आम कहे जो मान कौन कि शूद्र बोली से कौन कराला जगतपुर नहीं से पठा पाखे रखाईगला से कौन करेंगे कौन करेंगे से बर्तमान कौन छह सातटा जाए जेल पशिले बचू केमी आई प्रकार अच्छे कटक टाउन में जिते देखिए नर्सिंग होम प्रत्येक मुझे भावुँ बोधे मो जाना बोधे 20टा खंडे नर्सिंग होम खाली झील गुड़ाक डेली 100 टका लेखा मजूरी 100 टका हिसाब से जाकि रही खाली आड़ू साड़ू कम कर जी जो एरिया रही एरिया सेठी सी रिहाबिलिटेट करदे कौन सी गोटे बिजनेस रे आम जो डेभलपमेंट कथा कहूचे डिस्प्लेसमेंट करचे गोटे स्थान नहीं आउ गोटे स्थान रखी मु उदाहरण स्वरूप कह लर्निंग ट्री इंडिया आहरी बर्तमान रूम बढ़ ये जो अच्छा श्रीलंका तेणु ये हस्टेल को आम कौन महानदी विहार रखीदे से मो कथा बुझी पार्छ ना जिते आम डेभलपमेंट कथा कहूचे से डिस्प्लेसमेंट प्रोब्लेम डिस्प्लेसमेंट कथा कहला बेलू रिहाबिलिटेशन नहीं दैट इज द प्रोब्लेम थ्रू आउट ओडिशा थ्रू आउट इंडिया थ्रू आउट कटक थ्रू आउट कॉलेज जदि कौन जगह दुकान बजार भंगा हो गला गोटे मार्केट कम्प्लेक्स कर लोक मान रिहाबिलिटेशन करा हुआ इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी कौन सी प्रकार प्रोब्लेम आसता कि इकोनॉमिकली लोक मैंने टोटाली रिटार्ड आम भी देखुचे बहुत जगह भी सेटा होउची एबे भी मध्य देखिबो सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर देले ड्रेनेज ऊपर कौन सी दुकान रहिबो नाही बादामबाड़ी देखिनियो शंकरपुर एरिया देखिनियो नुआ बजार कॉलेज छक एरिया जिते देखियो चावड़ियागंज एरिया देखिदियो हजार हजार लक्ष लक्ष लोक बिजनेस शून्य बसी इवन पिलामानकर पाठ पढ़ा खाइबा रही प्रोब्लेम किछि किछि तिले लोक माने रूरल एरिया केन्द्रापड़ा साइड लोक माने से रहिथिले से छाड़ी करी घर को पळेले आ दुकान बजार नहीं लोक रही केमि चलिबे केमि आमर प्रकृति डेभलपमेंटल पर्सपेक्टिव एटा नुहे जितेबाला आम चाहिए कटक टाउन कि भुवनेश्वर कि राउरकेला आपको सब ट्विन सिटी आख्या देवाई ट्विन सिटी डेभलप लेवल लोक मान अर्निंग रहा दरकार आम कौन कर डेभलपमेंटल पर्सपेक्टिव नौचे कि लोक मान रिहाबिलिटेशन करूना तेणु तुम मान भितर मुझे बहुत पिला कही कि आईएएस पाइला भी किसी स्टेप नहीं ना तुम मान भर जो मैंने आईएएस पाइल कलेक्टर निश्चित हम मोर विश्वास अच्छी कि फास्ट स्टेप नब जे लोक मानकर केमिति रिहाबिलिटेशन प्रोग्राम रही किंतु से गादी रे बसिला पर के सुन अपील तापर हमें देखिबा वर्तमान हमर केरल साहित्य शास्त्र साहित्य परिषद जोटा में के एसएसपी के फुल फॉर्म गुडा सब नोट रे परिनबर स्पेशली गोटे गोटे कॉपी कर ए लोकल पीपल साइंस मूवमेंट ग्रुप took up the challenge and steered the move. They successfully mobilized local opinion against the dam. The movement also managed to rope in environmental experts like botanists, geologists of international record like Salim Ali. Salim Ali, the question may come. Salim Ali, कौन है वो? जाने geologist. धरा जाओ, the question may come. So far as option is concerned, multiple choice. प्रत्येक लाइन पढ़िबो, ब्यूरो बुक, आउ हमर विशेष जेनाड परिडा. अंडरलाइन करिबो जते डाउट हैला आबे डिस्कशन करिबा इकोनॉमिस्ट एंड इंजीनियर and this movement strengthened the KSSP's argument. SSP also forcibly presented its argument against the dam on the ground of adverse environmental consequences on a rate of ecosystem. Rich in biological and genetic diversity, the movement got national attention. The movement also stressed to international areas by involving World Wildlife Fund and International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Those bodies had joined the issue of the movement on the ground of protecting the lion tailed macaw
which is rare breed of habitant of a silent valley. This struggle lasted for quite long, furious debate campaigns and relentless lobbying through media. Parliament made dropping the idea of a dam in a silent valley possible. As a result of this successful movement, the scope for challenging environmentally unviable deployment policies, projects and schemes increased. आदर बहुत पिला टिके मिस्टेक देइछि जेना परिडा बुक रे बहुत गुडे मिस्टेक रहिछि जो मिस्टेक गुडा रहिछि आमे ताको कोन करा बिट बाय बिट नोट कला बेले को चेक करबा फिर भी मन रखा पिले जेतेबेले आमे कहिबा तमे जानि थिबो नेशनल इंटरेस्ट आगे सब गुडा को हमको कोन करबो ना प्रिटेंड करिया को पड़िबो प्रथम आमे फोकस करबा नेशनल इंटरेस्ट पर जदि कौनसी एरिया रे गोटे डैम कंस्ट्रक्शन करा जाउची और चेक करी रखिले बहुत गुडा एरिया सुखिला पड़िला डैम पर एरिया गुडा ये इट विल लीड टुवर्ड डेजर्टिफिकेशन माने दरकार पड़ले मरुभूमि भलिया परिस्थिति सृष्टि करिवो तेणु जेते बेले डैम कंस्ट्रक्ट कले केते लोकन पई बेनिफिट मिलिला कोन इरिगेशन किछि लोकन पई बेनिफिट मिलिला कोन ना प्रोजेक्ट रहउची एनर्जी रो किछि लोकन पई रहिला कोन फैसिलिटेशन हैला इकोसिस्टम किंतु पिले आम मानक भितरे गोटे बड़ प्रश्न जोटी आमे डैम कंस्ट्रक्शन करबा लोक मानकर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम केबे लॉस होबनी केमिति लॉस होबनी जो जगह रे एक्सेसिव वाटर अछि महानदी ऊपर आउरी दीटा डैम प्रपोजल जदि आसिला ताले हमको बेनिफिट मिलिबो किंतु ता माने नय जे ब्राह्मणी नदी ऊपर आउ दीटा डैम हम कंस्ट्रक्ट करिबो जोटी अधिक ये अछि जोटी अधिक वाटर फ्लो अछि सेठी जे हमें चेकमेट करबा ताले प्रॉपर वे से पानी टाको हम पर्सनल इंटरेस्ट को बेस करे डैम कंस्ट्रक्शन करले एटा ऑटोमेटिकली इकोलॉजिकल सिस्टम ऊपर हापर करे अर्थात से एरिया रे जति के जदि डैम कंस्ट्रक्शन हला जो वाइल्ड लाइफ रहउछन्ती से माने कोन हेबे ना डिस्कस करी एने तेने जिबे एंड इट विल आल्सो इम्बैलेंस आवर इकोसिस्टम then students chipko movement was basically concerned with the preservation and protection of forest मनर by it गोटे लाइन chipko movement कहां पर फोकस करूतिला preservation and protection of forest. It was an environmental movement for maintaining ecological balance in the sub-Himalayan region of Uttarakhand. 4 districts of Uttarkasi, Chamoli, Tehri and Pauri from Bharwal division and cover a total area of 27,000 square kilometers. Chipko movement also interpreted as a feminist movement. Manaraka Chipko movement particularly कहा द्वारा निर्धारित होइतिला feminist movement एटी वुमेन मानकर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन रहिथिला so as more number of women cultivators and households were involved in this activity this movement originated in the Dosahli Gram Swarajya Mandal in Gopeshwara of Chamoli district the movement initiated by Gandhian Sarvodaya workers जो माने गांधी जी का सपोर्ट रे थिले सर्वोदय वर्कर से मान को द्वारा इनिशिएटेड हितिला the chipko movement began on 24th April 1973 this date ought to be remembered तुमके वो काढनो ए बुका there was a historical conflict of interest over the forest and timber rights in this area between local villagers and sarvodaya workers on the one hand and timber contractors and forest bureaucrats on the other the contractors were able to exert more influence over the forest bureaucracy and local politicians to corner the forest benefits. The biggest chipko movement stirrings against government forest policy had taken place in this region too. The forest department rejected Sarvodaya workers' demand for 10 ash trees per annum for its farm tool work subset of which the support from Khadi and Gramodaya Commission. But the forest department allotted 300 ash trees to the Simon Company for manufacturing sports goods. The primary thus was accorded to sports goods over the self-sustaining needs of the poor cultivators. एवं ए डिमांड गुडा को कोन करिबा हमें मध्य डिस्कशन करी चली गेले हबनी पिले आ रिलेटेड तमे मन कर कोन करबा नोट एगुडा सब पॉइंट बाहरिबो चिपको मूवमेंट रो डिमांड कोन थिला चिपको मूवमेंट रो जो डिमांड थिला से डिमांड गुडा फुलफिलमेंट कोन पई न होई परिला
एवं चिपमे मूवमेंट रे जो रहिला हमर तार एजेंसी मानक हिसाब रे जो विशेष करी परफॉर्मेंस करा गला एजेंसी मानकर सेठी फॉल्ट कोन रहिला ऑलरेडी एटा कोन करछि ना डिस्क्रिप्टिव रे दे देछि बट वी मस्ट हैव टू थिंक इट आउट बाय चेकिंग सर्टेन टाइप ऑफ पॉइंट्स द कटिंग ऑफ दिस 300 released by the company agents was started in March 1973 एटा तला भाइट Sarvodaya workers and other villagers marched from the nearby areas to Kopeshwara. As a result of this resistance by the villagers, the company made quick retreat. In order to appease the protesters, the forest department showed readiness to concede one hour stay to Sarvodaya workers. Minimum gote hour stay provide kariba ko manako Sarvodaya worker manako mu janichi eta padi dala pare bi madhya concept tamar clear ho nathibo padila pare pare eguda ko note kale dhare dei padile concept clear कहीं ना ये कौन कर एनालिटिकली बुझे कि ना विरोग तेणु ए दीटा बुक मिसई आम रेफरेंस रे कौन करबा नोट कर दबा नोट बुझे दिले त मन पे कोशिकाता कंप्लीट विषय इस्टर दे हां देनी हां अच्छा as a result of this resistance by the villagers the company made bit retreat in order to appease the protester the forest department showed readiness to concede one asterisk for the workers if they let Simon company cut trees of its original quota. But the offer was rejected by the villagers. Ultimately, Simon quota was cancelled. Simon quota cancelled ये दिला कहीं के villagers मने support कले नहीं. In June 1973, another local leader organized resistance and launched the Chipko movement. The trees were granted by the villagers up to December end when permit was automatically loses its validity. तेणु local people, villager मने जेताबले wholeheartedly participation कले for the protection of the forest area, then to certain extent Chipko movement get to be materialized. Then thus Sundarlal Bahuguna of Uttarakhand Sarvadaya began his long march of 100 the ideology of Chipko movement in the Himalayan region. Another social activist, Sikpi Bhatt, also popularized the movement. He appealed women of trees in समस्त कहले कोऑर्डिनेटिंगली गछ को कोन कर कोळै के धरि नियो गछ को काटंतु के काटिबे सोशल एक्टिविस्ट माने एटा गोटे बहुत प्रकार रिवोल्यूशनरी एक्शन आस्तला मूवमेंट रे सो स्टूडेंट्स an attempt to cut down 2500 auction trees in Rani forest near Alakananda river was failed by the women leader Gauran Devi in village Lata. A band of about 30 women led by her saved by the trees by risking their lives. As a result of this personation by the Chipko protesters, government ban was imposed on tree cutting in Rani for 10 years. 10 वर्ष ପାଇଁ women ମାନଙ୍କର coordination जगो forest cutting ମଧ୍ୟ prohibited करा जायछिला. Thus Chipko movement become a good example of the people's non-violence resistance. एटा गोटे indirect question आसी परिबो. How Chipko movement become a good example of a people's non-violent resistance to the environment against the vested interest. लोकमानक vested interest विरुद्ध रे केमिति चलिथिले. This movement was spontaneous as ordinary hill people had come out in huge number without the usual lead, supported by any central organizational apparatus. Central government जति किछि self sufficiency पे material अपेक्षा local this movement accorded central position to the issue of renewable resources like renewable resources हमरा कोन soil forest एगुडा का renewable resources like soil forest was in the life ordinary dependent people. Chipko movement was closely linked to life livelihood and environmental issues. Life सहित livelihood सहित आ environmental ओडिसा रे कोन कोन environment movement हेछि एटा टिके मन देगी सुनिबो पिले like India many environmental protection movement were organized in Odisha in recent times. Odisha रे बहुत गुडा organize करा जायछि. Some of them were a local in nature. कोन कोन ना particularly हमें जे देखिबा Kalipal test range movement and some of them have attracted the attention of international environment. Vedanta alumina movement. In case of the following paragraph, an attempt has been made to analyze major environmental protection movements in Odisha. Odisha रे जो रही environmental protection movement बाबद में देखिबा first होची the Vedanta alumina Niyamagiri movements. देखो the Niyamagiri hill is situated in the border areas of Kalahandi and Rayagada. Niyamagiri कोडी Kalahandi Rayagada district has a huge bauxite deposit about 1950 lakh tons.
Vedant Aluminum Limited has signed a memorandum of understanding (MOU) with the government of Odisha for setting up an aluminum plant at Laningar and mining of bauxite from the Niyamagiri Hill package. The aluminum complex of Vedant include 1.0 MTPA alumina refinery plant at Ranjigad and a 3.0 MTPA of bauxite mining and 75 megawatt captive power plant at Ranjigad at an aggressive investment of rupees 4,500 crores. So, investment 4,500 crores investment. For this purpose, the company needs 723.343 hectares of land for its refinery and another 721.323 hectares of land for mining of bauxite on the top of the hill of Niyamagiri Hill. Niyamagiri Hill ଉପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏତିକି ଏରିଆ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା company to resolve aluminum plants. While efforts are being made to change a predominantly rural tribal economy and a hilly area into a major industrial complex, the people of the area have been strongly resisting the work of setting up the plant and mining of bauxite. A mass movement is going on by the local leader tribals since commencement of the project since 2004 under the banner of Niyamagiri Suraksha Samiti to protect the forest, land and water of the area, giving slogan Vedant Hatao, remove Vedant. Slogan. So the people cause has been taken up by the Kata Parishad and Survival International, Action Aid and Green Kalahandi. The Niyamagiri Suraksha Samiti has been formed by the local people to resist leaching out of the hills to company on the ground of protecting environment. देखो बिले এই ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଆମ ପ୍ରକାର ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଓଡିଶାରେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ସକ୍ସେସଫୁଲ ନ ହବାର କାରଣ କଣ ନା ଲୋକାଲ ପିପୁଲ ମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ କେବେ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ହେଇନି ଯେତେବେଳେ ଲୋକାଲ ପିପୁଲ ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ନ କଲେ ସେତେବେଳେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଲୋକାଲ ସପୋର୍ଟ ନ ମିଳିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କଣ ପିଲେ ଲୋକାଲ ପିପୁଲ ସପୋର୍ଟ ଦବାକୁ ହେଲେ ଲୋକାଲ ଟେକ୍ନିସିଆନ ମାନଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ସେଠି କୋଅପରେସନ ରହିବା ଦରକାର इंडस्ट्री कहूँ ट्राइबल पॉपुलेशन एरिया ट्राइबल लोकेशन सेठी आमे कोउटी स्किल लेबर मानकर अवेलेबिलिटी नाही तेणु करी ऑटोमेटिकली एजुकेशन आसीबो फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज local tribal and Dalit people. Their livelihood will be threatened by mining of bauxite at Niyamagiri. Moreover, Niyamagiri area composed of a forest and a grass ecosystem of extremely high value. It contains medical plants and it is the home of a number of vulnerable wildlife species. Ranging to a height of more than 1,000 feet. It is the source of Vangsadhara river as well as a major tributary of Nayabali river, which are useful for agriculture and the purpose of drinking water of the tribal people living in the foothills. जो मैंने agriculture पाई मध्य इटा fashionable हो दिला drinking water पाई मध्य proposed sufficiently useful हो दिला. Mining of in the hill or to touch the Niyamagiri hill is a sacred river of worshipping of Daugoria Kandhas, nahi? Daugoria Kandhas, a unique primitive tribe like endangered jaguars of Andamans will be on the brink of extinction due to the project. A project ପାଇଁ କେତେଟା ମଧ୍ୟ tribal ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ tribal ଗୁଡା totally extinct ହବାର chance ଥିଲା ଆଉ ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ରୁ ବିଶେଷ କରି migrated ରହିଥିଲେ ଦରକାର ପଡିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ endangered ଆଡୁ ଗତି କରୁଥିଲେ ତେଣୁ କରି ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର protection ମିଳୁଥିଲା. The proposed project has provided a political controversy between the government and the opposition Congress. The reports by a Supreme Court committee and other scientific organizations have worked out the adverse implication of the project. Project adverse अर्थात कौन result oriented एते नथिला negative perception रहितिला. So the report by the Supreme Court committee and other scientific organizations have worked out the adverse implication of the project. And recently, a review committee of the Ministry of Environment, Government of India, has suggested for discontinuance of the project. The CHILIKA movement. CHILIKA is a Turkish water lagoon, the largest in Asia, situated in the undivided Puri and Ganjam district.
Puri एवं Ganjam district to undivided question है कौन चिलिका. अच्छा, covering an area of about uh, 100,000 39 kilometers. Chilica is the home of migratory birds of 158 kinds of species. 158 kind of species are migration rate and a commercially important species to the tiger prawns. The tiger is the home as an economic resource of 192 villages. 192 village ମଧ୍ୟ ସେଠି ତାଙ୍କର ଲାଇଭଲିହୁଡ ପାଇପାରୁଛି source of livelihood जोड़ा पशु हमर पक्षी मान शिकार पाई ମଧ୍ୟ more than 50,000 fishermen living and livelihood time. Fishing has been a traditional occupation for centuries, and Chilica has a rare and inspiring history of fish producers, cooperatives, and village level democracy since early days. Village level democratic order ଲୋକମାନଙ୍କର participation ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି. However, in the early 1980s, prawn farming started in the region, and Chilica became synonymous with the prawns and money. तमे जानते हो पिले particularly चिलिका को यदि हमें देखिबा चिलिका जेतिकी कोस्टल एरिया रहिला मैक्सिमम टाइम आमे कोन करछे रोस्टर आमे विभिन्न प्रकार कोन करछे फिशरी एक्चुअली हमर चिंगुडी घेरी गोटे कहउछंती गोटे टर्म रहिछि तमे देखुथिबो आ हमर पर्टिकुलरली रहिछि कोन कि जो विशेष करी लुणा जलरू कलेक्शन करी करी फ्रेश वाटर मिक्सिंग रे गोटे प्रकार प्रपोजफुल वे रे आमे कोन करूछे ना फिशिंग पूरा फार्मिंग करिकरी जा द्वारा कोन करूछे ना एक्सपोर्ट करूछे बाहर को किछि किछि सेटा हमको बेनिफिट देई पारुछे आमे सेल्फ इंडिपेंडेंट हेई पारुछे पर्टिकुलरली फिशरमैन माने बहुत किछि आइलिंग रिजल्ट पाउछंती चिलिका अंडर द कोस्टल एरियाज. Next, student, the whole area became a gold mine, and with this transformation, the commercial invaders started appearing. Firstly, the traders and middlemen, then the politicians with their musclemen and mafia, and finally the big industrial houses, with the blessing of the state government, which was very keen for the development of the region. तीन प्रकार लोकमानंकर विशेष परिस्थिति चली gathering, गोटे traders and middlemen, second हेले politicians, and जो माने हमें कहउछे कि particularly जो माने muscle power जो मान करछि mafia माने आता कर रहले the big industrial houses. In 1986, the Indian Congress government leased out 1,400 hectares of a prime area for Chilica to company to be formed jointly by the Tata and the government of Odisha. In 1991, the Janata Dal government invited the Tatas to form a joint sector company for prawn development in the Chilica. Chilica पाखरे हमर prawn industrial establishment ହେଇପାରିବ. Then this gave a death blow to the livelihood of 50,000 fishermen and the dependents of 2 lakh people to their traditional rights. And this gave birth to an internal struggle. गोटे प्रकार internal struggle arise कला. The fishermen from 192 villages united themselves under the banner of Matsyajeevi Mahasangha Fishermen Association to fight for their rights. They were jointly a group of students from Utkal University and ETR. Was this united struggle gave birth to Chilika Bacha Andolan, Save Chilika movement. The Chilika movement was a protest against the pattern of development which threatened peace, development, ecology, and livelihood of the poor. Poor people livelihood to protect Karutila. But when the state government not erected the protest broke the dam, which was built by the Tata inside the Chilika. After a prolonged agitation, finally the government succumbed to the pressure of the people and the Tata company has withdrawn from the project. ଯେତେବେଳେ ଚିଲିକାରେ କଣ ହେଲା ନା ଆମର ଏଜିଟେସନ ଆସିଲା टाटा कंपनी रो जो सिनेरियो थिला जो एस्टैब्लिशमेंट में प्रपोजल थिला सेति से स्किप करी गल. This was a comparatively one of the toughest struggles, but it was a successful movement in Odisha. Odisha रो गोटे सक्सेसफुल मूवमेंट कहले अति अबिले एटु पुनी हम स्टार्ट करिवा. ये सोशियोलॉजिस्ट